So, hello guys, welcome to the new video of this channel. So, let me ask you something. Have you ever taken a trade and when it goes in profit, then after seeing such green candles, after showing your PNL in blue, you exit the trade like early because you are just fear of losing the profit, and after booking the profit, then you see the market goes to your direction, and when it goes to your direction that you feel like an idiot. Okay. So, because this is something that is also we called exiting early in profits. This is one of the most biggest mistake every trader do in their early days. Okay, so today I will explain you why this happen, what will happen to your brain, what is inside your heart that happens make this, and how to fix it. Okay, so most of the traders think that their problem is only the strategy, but honestly strategy is not the reason you exit early. The main reason they exit early because of fear. What fear? The fear of losing their profits, the fear of reversal post past loss trauma, and the fear of what if it comes back. Okay, so this type of things, this type of fear, they destroy many traders. So most of the traders think that their strategy is only the problem, but the strategy is not. The main problem is the fear. Okay, so this fear destroy your growth as a trader completely. So how to fix this? Okay, so let me first at first let me tell you that why this type of things happen. Okay, the first thing that goes inside your head is exactly safety. What kind of safety? Because your brain doesn't even care about profits. Your brain only cares about the profits only in the meantime, in the smaller time frame profits. Okay, they don't care about the long term. Suppose that you are taking a trade today, and you just your TP is of $500 and your SL is of $100. So when you see that the profit are like $50 or $80, you think that if it goes, then you will lose your $100, so you book your trade. Okay, but after you book your trade, then you see the trade, your trade that is going in your direction and hit the $500 profit, because your brain stops working at that time. Okay, because it's not because you are stupid, it's because your brain stops working and you just listen to your heart for some times. Okay, the second point is past loss trauma. So what is that? Many of the times you have seen your 100 rupees profit goes to like 200 rupees loss. This type of things happen to us most of the times. So after seeing this type of things happens to us after, and that thing just that have been done some years ago, some days ago. बट जब तुम अभी ट्रेड ले रहे हो, तुम्हें बस तुम्हारे माइंड में बस ये है कि तीन तीन दिन पहले, 4 दिन पहले तुम्हारा $1,000 का $1,000 का प्रॉफिट 2,000 में लॉस में बुक हुआ था। तो तब तुम क्या करते हो? जब तुम 500 रुपीज़ प्रॉफिट देखते हो, तुम अपना ट्रेड बुक कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारा जो ब्रेन है वो अल्टीमेटली सेफ्टी जाता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन को प्रॉफिट के बारे में नहीं, तुम्हारे बस अपना कैपिटल बचाने का बस कोशिश कर रहे हो तुम, ठीक है? So all every time just your brain just think that just don't be greedy and just take the 500 rupees and just go off for the day, because that type of things happen most of the times, because you don't even trust your setup. Okay, so there is another point that you don't even trust your own setup. So let's be honest. Okay, most of the trader don't exit early because they want to. They just exit early because they don't trust their own setups. Okay, so they are not even fully confident about their own setups. So if you just see, if your setup came, you don't even trust your straight setup. You take your trade, and after it goes for 1:1 or 1:0.5, not 1:2, 1:3, 1:1 or 1:0.5. You just think that what if it comes back, what if it reverses now? Then you just book your very minimal profit, and then you see your trade goes to your direction. Okay, because you don't even trust your own setups, because setups doesn't come from just seeing the charts. The setup, your confidence come from proofs, because the longer you backtest your own setups, the larger you can take your profits. Okay, the fourth point is the small profits that feels bigger. Okay, so suppose कि तुमने एक ट्रेड लिया है, ठीक है? तुम्हारा टीपी है $1,000 का, तुम्हारा एसएल है $400 का, 1:2.5 ट्रेड। ओके, सो जब तुम देख रहे हो कि तुम्हारा $200 का प्रॉफिट चल रहा है, फिर $250 का प्रॉफिट चल रहा है, तो फिर तुम अपने आप उसको लॉस को प्रॉफिट को बुक कर ले, क्योंकि तुम्हारा जो मेन टारगेट है वो बस लॉस नहीं करना है, प्रॉफिट नहीं कमाना है, क्योंकि तब तुम्हारा माइंडसेट यही है कि मुझे बस अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, जितना भी प्रॉफिट है। या फिर तुम्हारा टारगेट था $1,000 का, तुम बुक कर रहे हो $200 में, क्योंकि
तुमको बस सेफ्टी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. ओके, because the market, they just reward the patience, they don't reward you now, they don't even rewards you for your brain, that type of activities. Okay, so what is the fifth reason? The fifth reason is the fear of being wrong. This is a very deep reason. Many of the traders, they are just feared of being wrong because they just trust their setup too much. They don't accept their losses because उनको लगता है कि उनका जो सेटअप है, उनका जो स्ट्रैटेजी है वो 100% एक्यूरेसी है. ठीक है, वो सचमुच में बोलते, लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, किसी का स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होता. सबका 60% होता है, किसी का 50% होता है, किसका 40% होता है, किसी का 70%, 80% ऐसा होता है. ठीक है, हर एक का डिफरेंस होता है. बस जो एक्चुअल द थिंग है कि जब वो प्रॉफिट करते, जिसका 40% का विन रेट है, वो 10 में से 6 लॉस कर रहे हैं, 4 प्रॉफिट कर रहे हैं, बट फिर भी वो प्रॉफिटेबल इसलिए है क्योंकि व्हेन दे विन बिग. ओके, वो जब जीतते उनका इतना आर रहता है, आई मीन 1:10, 1:8, इतना उनका आर रहता है, तो फिर इसके लिए भी वो प्रॉफिटेबल रहते हैं. ठीक है, सो और जिसका 60% होता है, इसका आर कम हो जाता है क्योंकि द मेन गेम इज ऑफ आर एंड विन रेट. ओके, इट्स नॉट लाइक कि अगर तुम ट्रेडर हो तो फिर कभी कभार तुम रॉन्ग भी प्रूव होते हो, कभी कभी तुम राइट भी प्रूव होते हो. तुम जो मैटर करता है वो बस है तुम्हारा खुद का स्ट्रैटेजी, तुम्हारा खुद का ब्रेन, तुम्हारा खुद का विन रेट, तुम्हारा खुद का सेटअप. ठीक है, ये कुछ 4 से 5 पॉइंट है जो तुम्हें मैटर करता है लॉन्ग टर्म रेस जीतने के लिए. ठीक है, सो सपोज कि ऐसा तुम्हारे साथ होता है और तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो. ठीक है, मतलब नहीं बन पा रहे हो. ठीक है, तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? तो देयर आर सम points that can help you prove, I mean there are some points that can help you fix this type of things. So what is the first thing? That is partial bookings. If you are taking a trade of 1:4, okay, suppose कि you are taking a trade of 1:4, when it comes to 1:1 or 1:1.5 or 1:2, you can just partial book your trades. Okay, I mean partial को अगर suppose कि if let's give an example कि अगर तुम लॉट साइज यूज़ करो, ठीक है, 0.1, ठीक है, 0.1 का लॉट साइज है तुम्हारा, तो फिर when your trade comes 1:1.5 or 1:2, then you can book your 50% of your lot size, I mean 0.05. So if your target is of $100, if you book partials, then you can just hold the rest of the quantity for the final TP, and then you can just book your original SL and you just leave your SL whereas as it is, because if the SL comes you will not lose your money because already your 50% of the quantity profit that is already been done. And if it goes for 1:2, I mean if 1:1 पे तुम बुक कर रहे हो, 1:1 में बुक कर रहे हो, तो फिर अगर वो SL जाता है तब तुम ब्रेक इवन रहते हो. बट अगर 1:1.5 या फिर 1:2 पे तुम करते हो अपना पार्शियल बुकिंग, तो फिर एक मिनिमल लॉस तुम्हारे साथ रहता है, एक मिनिमल टाइप ऑफ प्रॉफिट रहता है, सॉरी मिनिमल प्रॉफिट रहता है. ठीक है, सो ये तुम कर सकते हो पार्शियल बुक करने. उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द लॉट है उसको तुम छोड़ दो टीपी के लिए या फिर एसएल के लिए, फिर भी तुम प्रॉफिटेबल ही रहोगे. ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट है वो है स्टॉप वॉचिंग एवरी कैंडल्स. ठीक है, सपोज कि तुमने एक ट्रेड लिया है, ठीक है, जो एक हाई टाइम फ्रेम का ट्रेड है, तो फिर तुम्हारा टीपी है 500 पिप्स और अब तुम्हारा एसएल है 100 पिप्स का. तो फिर अगर तुमने ट्रेड लेने के बाद हर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के इंटरवल पे तुम अगर चार्ट को खोलते रहोगे, कैंडल देख के फोमो करते रहोगे, तो फिर तुम अपने आप 1:1 पे या फिर 1:1.2 पे अपना ऑलरेडी तुम बुक कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा जो ब्रेन है वो बस सेफ्टी चाहता है. ठीक है, इसके लिए मेरा जो सजेशन है वो तुम्हारे लिए है कि अगर तुम ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद फोमो नहीं करते, ठीक है, बस या तो चार्ट से निकल जाओ या तो हायर टाइम फ्रेम में स्विच हो जाओ. ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में स्विच होने के बाद 15 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स या फिर 1 आवर का चार्ट देखना, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाएगा. ठीक है, और उसके अगर नहीं करना है तो फिर जस्ट वॉक अवे फ्रॉम द चार्ट्स, एंड देन आफ्टर 1 आवर और 2 आवर और 3 आवर जस्ट कम बैक इन द MT5 या फिर ट्रेड लॉकर जो भी तुम ब्रोकर यूज़ करते हो, और अपना ट्रेडिंग व्यू पे जाके जस्ट देख लेना कि टीपी आया फिर एसएल आया. तो अगर एसएल आया तो फिर वेट कर लेना थोड़ा और डिटेल में एनालिसिस करने के बाद एक और ट्रेड ले लेना, या फिर और एल्स, ठीक है, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम द चार्ट्स. ठीक है, बिकॉज द मेन गेम इज जस्ट सर्वाइविंग इन द लास्ट, नॉट जस्ट डूइंग सम टाइप ऑफ स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस डेली. ठीक है,
तुम्हें बस सर्वाइव करना है, उसके बाद देखना धीरे धीरे तुम खुद ही जीत जाओगे, ठीक है। द थर्ड पॉइंट दैट कैन हेल्प यू फ्रॉम दिस इज जस्ट मूव योर एसएल टू द ब्रेक इवन, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? It is a very small technique, okay. Once your price just comes your direction, your favor, and अपना उसके बाद जो एस एल है तुम्हारा, जो आई मीन अगर सपोज कि तुम एक ट्रेड ले रहे हो जिसमें तुम्हारा $500 का प्रॉफिट है, टीपी है, और $100 का एस एल है, ठीक है। तो फिर सपोज कि एक पॉइंट आ गया जिधर तुम्हारा 1:1 हो गया, फिर कोई स्ट्रक्चर ब्रेकिंग है, फिर कोई सपोर्ट का ब्रेकडाउन है, उसमें अगर वो आ जाता है, ठीक है, सक्सेसफुल ब्रेकडाउन आ जाता है, उसके बाद तुम क्या करोगे? अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारा ट्रेड जा सकता है इधर, तो फिर अपने ट्रेड को जस्ट सिंपली ब्रेक इवन कर दो, अपने एसएल को बस ब्रेक इवन कर दो, उसके बाद वो जस्ट वॉक अवे फ्रॉम द चार्ट्स, बिकॉज उसके बाद अगर तुम्हारा ट्रेड रिवर्स भी करता है तो फिर तुम्हारा लॉस नहीं होगा, तुम्हारा बस ब्रेक इवन हिट होगा, ठीक है। ना तुम्हारा प्रॉफिट होगा ना तुम्हारा लॉस होगा, ठीक है। देयर आर जस्ट टू टाइप ऑफ थिंग्स, एक था मैंने बोला जो, ठीक है, जो हाफ लॉट बुकिंग का, ठीक है, पार्शियल बुकिंग का, और एक है कि जस्ट यू मूव योर एसएल टू द ब्रेक इवन, ठीक है। दिस आर सम टू टाइप ऑफ थिंग्स दैट आई एम जस्ट टोल्ड यू दैट विल हेल्प यू, ओके। द फोर्थ पॉइंट इज जस्ट ट्रेड विथ द फिक्स्ड रूल्स, नॉट योर फीलिंग्स, ठीक है। अगर वेन यू आर जस्ट trading with your feelings, okay, you are just feeling that it might now reverse, it might just give you loss, then you just book your losses, ठीक है। ये तुम सोचोगे तो फिर तुम्हारा लॉस अपने आप हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जस्ट मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा छोटा रूल बना दो कि तुम बस या तो टारगेट पे निकलोगे, या तो कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक पे निकलोगे, या तो कुछ सपोर्ट के बिलो अगर क्लोज देता है तभी निकलोगे। उसके बाद तुम अगर वो नहीं आता तो फिर तुम नहीं निकलोगे, ठीक है। बिकॉज ट्रेडिंग जस्ट फील लाइक अ बिगेस्ट लायर, ठीक है। दिस टाइप ऑफ थिंग्स जस्ट फील्स लाइक अ बिग लायर व्हेन यू आर जस्ट ट्रेड विथ योर फीलिंग्स, ओके। जस्ट डोंट, माई सजेशन विल बी डोंट ट्रेड विथ योर फीलिंग्स, ट्रेड विथ योर ओन ब्रेन एंड with the proof, with the confidence that you have just successfully backtested 50 trades, 100 trades, just that type of thing will help you, okay. So remember this, ठीक है। Your job is not to predict every move. Your job is to follow your plan. A trader who exits early is not a real trader. He is just a trader who is still fighting his emotions. So the next time you exit early, don't blame the market. Ask yourself, did I exit because of logic or out of fear? Okay. Because the day you control this fear, your profit will automatically increase. Okay. So guys, if you found this video helpful, then subscribe to our channel, like this video, and if you guys want free trades daily, then you can join our Telegram channel. The link is in the description. Thank you for watching. Bye bye.